Morning students, today we are going to understand next sum from accounting for debentures. Sum number 12, Voltas Electric Limited purchased following assets and liabilities from Navrang traders. Then these assets and liabilities are purchased from Navrang traders. Decided to pay for a purchase consideration of rupees 15,36,000 rupees. Voltas Electric Limited paid the purchase consideration by issuing 11% debentures of rupees 100 each at a premium of 20%. Past journal entries in the books of company. Students, इस सम में नेट एसेट्स फाइंड की जाएंगी. नेट एसेट्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, total assets minus total liabilities. Then students, after that we will find out goodwill or capital reserve. If purchase consideration is more than the net assets, then it is goodwill. If purchase consideration is less than net assets, then we will find out capital reserve. So we have to find out net assets. कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स. कैलकुलेशन, परचेस कंसिडरेशन इज गिवन 15,36,000 rupees. We have to find out net assets. Calculation of net assets. So assets is given here. Land and building 8 lakh, machinery 2,75,000. Land and building 8 lakh, machinery 2,75,000. Then next, furniture 1,20,000, stock 2,25,000. Furniture 1,20,000, stock 2,25,000. After that, debtors 80,000 and creditors 80,000. Debtors 80,000. Then we will make total of these assets. Then we will get total assets 8 lakh plus 2,75,000 plus 1,20,000 plus 2,25,000 plus 80,000, 15 lakh, less liabilities. Liabilities here, creditors is given 80,000. So 80,000 will be deduct from 15 lakh. Then we will get 14,20,000 net assets. So we will find out here goodwill, because purchase consideration is more than net assets. So goodwill equals to purchase consideration minus net assets. Purchase consideration is 15,36,000 minus net assets 14,20,000. Difference will be 1,16,000 rupees. Then journal entries करेंगे स्टूडेंट्स. एसेट्स डेबिट होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट
जो हमने गुडविल की वैल्यू फाइंड की वो अमाउंट लिखेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट 1,16,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8 lakh, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,75,000, furniture 1,20,000 and stock 2,25,000. Then machinery account debit 2,75,000, furniture account debit 1,20,000, stock account debit 2,25,000, debtors account debit 80,000. देन स्टूडेंट्स क्रॉस वेरीफाई कर लें। लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख, मशीनरी 2,75,000, फर्नीचर 1,20,000, स्टॉक 2,25,000 एंड डेप्टर्स 80,000. देन 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, लायबिलिटीज को क्रेडिट किया जाता है 80,000. आफ्टर दैट परचेस कंसिडरेशन, और क्रेडिट करेंगे जिसके पास से परचेस किया जाता है उसका नाम, नवरंग ट्रेडर्स अकाउंट, और जो परचेस कंसिडरेशन है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 15,36,000. देन नरेशन बीइंग परचेस ऑफ assets and liabilities of नवरंग ट्रेडर्स. आफ्टर दैट इश्यू करेंगे स्टूडेंट्स डिबेंचर्स को जो प्रीमियम से इश्यू किया जाता है. देन नवरंग traders account debit because purchase consideration is given to Navrang traders, so Navrang traders account debit to 11% debentures account to security premium reserve account. Then 15,36,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स 11% डिबेंचर्स में और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में. इसके लिए फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स. देन नंबर ऑफ डिबेंचर्स का कैलकुलेशन करेंगे. नंबर ऑफ डिबेंचर्स इक्वल्स टू परचेस कंसिडरेशन डिवाइड बाय amount per debenture. Then purchase consideration is 15,36,000 divide by face value is 100 and 20% premium means 20 rupees. 15,36,000 divide by 120, we get 12,800 debentures. These are number of debentures. Then 12,800 multiply by 100 transferred to 11% debentures account means 12,80,000. 12,800 multiply by 20 is transferred to security premium reserve account means 2,56,000. Then narration being issue of
12,800 debentures at 20 percentage premium for purchase consideration. देन स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 12. इट इज नॉट necessary to make total here. Students, if you like the video, please like, share and subscribe to support us. Thank you students.